अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? सब ठीक हो? मिर्जा भी उस पर एक बार फिर आपका वेलकम करता हूँ। आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं बांग्लादेश के बारे में और इंडिया के रेलवे के बारे में। बांग्लादेश वर्सेस इंडियन रेलवे, तो ब्रांच चो वालों की वीडियो है। ब्रांच चो हिंदी, तो उन हिंदी में इसलिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ ताकि थोड़ा समझ भी आए। हिंदी में बोलेंगे तो हमको भी समझ आएगा, उर्दू हिंदी मिक्स, तो आपको भी इंशाल्लाह समझ आएगा। वीडियो के बारे में इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तो चलिए वीडियो देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उनको भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलें, और अगर अच्छी लगे तो लाइक भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, आपको न्यू अपडेट्स मिलेंगी। तो चलिए वीडियो देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। लेट्स गो। Hello and welcome to Brain Chow. हेलो, Today's वेलकम। comparison is going to be between Indian Railways and Bangladesh Railways. Oh man, before I start this video, I know what the comments are going to be like. Boom! Don't compare India with smaller countries. Instead, make comparisons with China or USA. If you have something like this in your mind, then you're definitely new to this channel. Our regular viewers know that we have already compared No Indian hate railways to comments, no hate Chinese, comments. Okay. British, Russian, American, and Japanese railways on this channel. Anyways, let's begin. Let's begin. Number 1. One. Fastest train. Bangladesh Railway Class 2900 is the name of the locomotive that is used by premium trains in Bangladesh like Subarna Express, Sonar Bangla Express and Parabat Express. The maximum speed of this locomotive is 107 km per hour. Meanwhile, the fastest train in India is the Gatiman Express, which has maximum operational speed of 160 km per hour. 160. Fastest train when we consider capacity speed is Tejas Express. 200. It has the ability to run at 200 km per Tejas hour, 200. but it operates at less than 160 km per hour. That maximum First point 200, goes to no? India. Point goes to India. Number 2. Metro Rail. Bangladesh currently does not have any operational metro trains, Metro coming but the in Dhaka Bangladesh. Metro is under construction and is expected to be completed by 2021. Meanwhile, in India, 11 cities already have metro rail. 25 more cities are in various stages of building metro lines. 2020, This point goes to 2018 India का as video well. इसके लिए And before पुराना I video। continue with this video, I want to make one thing clear. The objective of this video is not to insult Bangladesh by any means. Bangladesh got separate independent country in 1971. India gained independence 24 years earlier. Bangladesh is growing remarkably fast and has almost caught up with India in lot of developmental metrics. And we Indians are proud of your growth and ये नहीं सोचने का। achievements. Number 3. Number 3. Prices of tickets. Both railways are among the cheapest in the world. ऐसे नहीं जाना An चाहिए। AC class seat ticket from Dhaka to Chittagong costs rupees 571. In India, an AC chair car ticket will cost you rupees 470 for a similar distance. नियम में कम Traveling है। by Indian Railway will be slightly better for your bank balance. पैसे भी कमती हैं और Number 4. चार्जेस कम हैं। Safety. Both Indian and Bangladesh Railways have really poor safety records. But the good thing is that both countries are working on improving the situation. The number of rail accidents in India has been declining steadily over the past 10 years. Financial year 2016-17 saw the least number of accidents in the last 10 years. But we have a long way to go as the numbers are still far from acceptable. सेफ्टी पे काम करना चाहिए। Bangladesh has had way fewer rail accidents than India. India's bigger network of railway and higher population might be the reason behind it. But still, we have to give this point to Bangladesh. Bangladesh 1. Number 5. Crowding. Bangladesh and India are among the most densely populated countries. The demand for rail travel far exceeds the capacity. Trains look something like this
during Eid in Bangladesh. The situation is not much better in India either. These two ज़्यादा से nations ज़्यादा need to drastically increase the capacity. We can't give ऐसे a नहीं point जाना to चाहिए। either country in this regard. Number 6. Luxury trains. लग्जरी ट्रेन ये The देखना था। Sonar Bangla Express is considered the first luxury train of Bangladesh. सोनार बंगला It is not really a luxury train. You can compare it to Shatabdi or Rajdhani. On the शताब्दी other है। hand, India has one of the best fleet of luxury trains in entire world. No doubt that India महाराजा wins this point. इंडिया में बहुत Final लग्जरी score ट्रेन is 4-1. Yes, India might have won comfortably, but common people in both countries still face similar problems like overcrowding and poor hygiene. The trains are not particularly very punctual either. So be respectful to each other in comment section. And don't forget to subscribe to our channel. Otherwise, you are at a risk of missing out our future comparison videos. Don't forget, okay? और don't forget to subscribe her channel और don't forget to subscribe our channel, okay? तो सबसे बड़ी बात है कि इंडिया बहुत बड़ा है, इंडिया का रेलवे बड़ा है, तो ट्रेन्स भी बहुत ज़्यादा, जैसे कि तेजस है, उसके बाद अभी जो ट्रेन 18 आई थी, ट्रेन 22 शायद आने वाली है, तो बहुत सारी ट्रेन अभी इंडिया में न्यू आने वाली है, बुलेट ट्रेन आने वाली है, हाइपर लूप है, हाइपर लूप भी आने वाला है। लेकिन इन देखो बांग्लादेश की ट्रेन के हिसाब से बोल जो हाईएस्ट लक्सी ट्रेन बोलते हैं वो शताब्दी और उसके लेवल की ट्रेन है राजधानी इंडिया। लेकिन बहुत ज़्यादा जो लक्सी ट्रेन नहीं है बांग्लादेश में, लेकिन आने वाले दिनों में मेट्रो आ रही है बांग्लादेश में, बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट चालू होने वाला है। तो दूसरी बात ये क्राउडेड जो काम है इसको स्टॉप होना चाहिए। इसमें कितने लोग जो है वो डैमेज होते होंगे, कितने लोगों को जान से जाते होंगे, कितने एक्सीडेंट होते होंगे। तो क्राउडेड गवर्नमेंट इस पर ज़्यादा काम दे, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन चलाई जाएँ, ईद के मौका पे, फेस्टिवल्स के टाइम पे ज़्यादा बसेस हों, ज़्यादा ट्रेन हों, तो ताकि लोग इजीली जो है उनको अफोर्डेबल हो और इजीली ट्रेन मिल सके घर में जाने के लिए। जो सिटीज़ से गांव में अपने घरों में जाते हैं लोग, फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं सिटीज़ में आकर, तो वो भी बहुत ज़्यादा तादाद होती है, लाखों की तादाद में लोग होते हैं जो ढाका आते हैं काम करने के लिए, फिर उनको जा नहीं पाते, फिर ऐसे ट्रेन के ऊपर बैठ के जाना पड़ता है, जो कि रिस्क होता है लाइफ, और कितने लोगों का नुकसान होता भी है इसकी वजह से। ठीक है, तो उस पर काम करना चाहिए, गवर्नमेंट्स को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन भी चलाए, रेलवे को बड़ा करे। लेकिन वही बात है कि प्रोजेक्ट्स बहुत स्लो चल रहे हैं और टाइम लगेगा आने वाले दिनों में एक्सटेंशन करने में, रेलवे को बड़ा करने में टाइम लगेगा। इंडिया में भी अभी और ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन इंडियन नेटवर्क बहुत बड़ा है रेलवे का, लेकिन फिर भी पब्लिक बहुत है ना, डेंसली क्राउडेड जो सिटी है बांग्ला ढाका, उसमें 2 से 2.5 करोड़ आदमी है, तो वहाँ से लोग जाने आगे पीछे जाएंगे तो ऐसे ट्रेन भी बैठ के जाने पड़ेगा तो भी रिस्क लेते हैं। बांग्ला इंडिया में भी ऐसे होता है, बहुत ओवर क्राउडेड हो जाता है, ट्रेन मिलती नहीं। तो दोनों कंट्रीज़ की प्रॉब्लम तो ये है। पाकिस्तान में भी ऐसा है, ट्रेन बहुत कम है, ट्रेन को ज़्यादा बड़ा नहीं किया, ट्रेन ट्रैक्स नहीं बनाए गए ज़्यादा, प्रॉब्लम सब कंट्री की है। लेकिन पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है रेलवे में, और बांग्लादेश में भी ठीक है, पाकिस्तान से बेटर है, लेकिन और ज़्यादा करने की ज़रूरत है। तो चलिए, आपको कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइए, नो हेट कमेंट्स। जैसा कंट्री बड़ा है उसकी रेलवे भी बड़ी होगी, जैसे कंट्री बड़ा है उसकी बाकी चीज़ें भी बड़ी होंगी। तो ऐसा ऐसा सब तरक्की करें, हमारी गुड लक, बेस्ट विशेज़ है। तो मिलेंगे किसी और अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।